ओके गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम बैक. So probably I guess I have missed a great move in Ethereum. हाँ, तो मेरे को लगता है कि मैंने एक ग्रेट मूव को स्किप कर दिया है, बट कोई बात नहीं. मार्केट से मूव आते जाते रहते हैं. So welcome to the day 4, right? So side by side what I'm trying to do is that मैं करूँगा कंपैरिजन. सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ. साइड बाय साइड मैं क्या करूँगा कि मैं करूँगा कंपैरिजन ऑफ दी चार्ट्स. बेसिकली मूवमेंट को डिस्क्राइब करूँगा कि आखिरकार में हुआ क्या है मार्केट के अंदर, राइट. तो उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं सबसे पहले जितना भी NWOGs हैं, NNDOGs हैं, उन सबको ड्रॉ कर लेता हूँ इसके अंदर. ठीक है, तो लेट्स गो टू द डेली चार्ट. एग्जीक्यूशंस को भी मैं कुछ टाइम पीरियड के लिए हटा देता हूँ यहाँ से. डोंट वांट द एग्जीक्यूशन, राइट. ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच. ये क्या है कि ये हमारा डेली हाई है एंड डेली लो है, राइट. हम लोग ने इसको मार कर लिया. उसके बाद हम लोग मार कर लेते हैं NDOGs एंड NWOGs, राइट. तो इसको मैं बेसिकली हल्का सा डीप से मार करता हूँ कि ये हमारा है NDOGs एंड NWOGs बेसिकली. ये तीन चार, राइट, मार कर दिया. और बेसिकली हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो एक्चुअली पूरे मूवमेंट को सरवाइव करा रहा है. दिस इज अ बेरिश फेयर वैल्यू गैप एंड दिस इज अ बुलिश. अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फेयर वैल्यू गैप को लेते हो. लेट्स ट्राई टू टेक दिस बुलिश जब तक ये इस पर्टिकुलर लेवल के अंदर है. मैं हार्ड करके इसको एज अ ग्रीन से डिलिनिएट कर देता हूँ. एंड ये जो मेरे बड़े वाले फेयर वैल्यू गैप है, विच इज़ द बिगर फेयर वैल्यू गैप, तो मैं थोड़े से डार्क से डिलिनिएट कर देता हूँ. नहीं, तो दैट इज़ इट. हम लोग ने बेसिकली अपनी PD रेस को बना लिया. एंड इट्स लुकिंग वेरी अनस्ट्रक्चर्ड, राइट, इजंट इट? आपको लग रहा होगा कि ये तो यार पूरा ऊपर नीचे लग रहा है. कोई बात नहीं, कैन फील लाइक दैट फॉर सम टाइम, जो कि नॉर्मल है. दैट इज़ नॉट अ बिग डील. बट आई एम वर्किंग ऑन इट कि मैं कैसे स्पेशल पीड एरियाज का यूज़ करूँ, जो मेरे को क्या करे कि पता है कि कौन कौन सा पीड एरियाज का यूज़ नहीं करना चाहिए. तो अभी बात करने वाले हैं बेसिकली ये मूवमेंट के बारे में, राइट. यहाँ पर हमारे पास एक BC था एंड ऐसा यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस इवन दो क्रॉस दैट पर्टिकुलर एरिया, बट प्राइस यहाँ से रिजेक्टेड दैट एंड मूव्ड अप, राइट. तो हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर इस पर्टिकुलर एक्शन को देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि आखिरकार में इसके अंदर हुआ क्या था. सो लेट अस स्टार्ट अवर एनालिसिस, राइट. Okay, so yeah, there you go. सबसे पहले मैं सारे ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ. लॉन्गर नहीं दे ये वाला. मैं तो 15 सेकेंड के चैट के अंदर. तो बेसिकली ये था हमारा वो BC, which is right over here, this one. ये था हमारा BC. ठीक है, if I go back to the 1 minute chart, तो यहाँ पर
we got a reaction from the consequent encroachment of this 5 minute VC, which was absolutely very good reaction. It moved up, but it struggled. कहाँ struggle कर रहा है? ये एरिया के अंदर, है ना? और ये क्या चीज़ है? अगर आप यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट को डिलीनिएट करोगे, so what you will get here is that आपको यहाँ पर एक सिबी मिलेगा, राइट है। देखो ये मैं हमेशा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, जो मैं भी कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा कि मैं बता दूंगा आपको, बिकॉज ये सब चीज़ें जो मैं अपनी आंखों से पिन पॉइंट करता हूँ, नॉट कि लाइक मैं पूरे चार्ट्स को हमेशा अपना गंदा करने जाऊँगा ये करने के लिए, राइट। देख सकते हो, मूव अप फ्रॉम हियर बट इट स्ट्रगल टू गो टू द कॉन्सिक्वेंट क्वेश्चन, राइट, दैट पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद इट अगेन ट्राइड देयर बट इट स्ट्रगल देयर। इसने क्या किया कि इसने अपर के हाई को ले लिया। वी ऑल्सो हैव एन वॉल्यूम इम्बैलेंस हियर, सो जस्ट टेक नोटिस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। इसने अपर हाई को लिया एंड देन बैंग जस्ट मूव डाउनवर्ड्स एंड के बाद ये डाउन मूव किया एंड अपने ये जो पर्टिकुलर डाउन एरियाज थे, जो लोअर क्वाड्रेंट्स एरिया थे 5 मिनट BC के, उसका यूज़ किया। इट मूव्ड अप अगेन डाउन। तो ये क्या आपको दर्शा रहा है? राइट वे वी आर इन HRLR, क्योंकि प्राइस जो कैंडल्स है, जो बॉडीज है, दे आर डेफिनेटली दे आर नॉट मेकिंग स्पेसेस। तो ये आपको बोल रहा है कि जो प्राइस है वो भी एक HRLR, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के अंदर प्राइस चल रहा है अभी, है ना, राइट। सो it take that volume imbalance, you can just mark this whole fair value gap here. It used the upper quadrant of that fair value gap, right. Moved up. To be honest, if I would be in this particular condition, I would have buyed over here and I would have put my stop loss over here. This volume imbalance, मैं would have waited कि देखते हैं कि प्राइस आखिरकार में करता क्या। Moved up. See, the thing is that whenever you are trading, just make sure that कि अगर आपके ऑपोजिट साइड के अंदर जो भी आपके पास पीडी रेज है, जो भी है, आपको ये चाहिए कि वो आप मतलब जो उसका जो लेवल्स है वो आपके प्राइस एक्शन के बीच में नहीं आ पाए, मतलब आपको एक प्रॉब्लम ना बनाए बीच में आके। तो ये आपको, मेरा आवाज़ तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, हेलो हेलो, हाँ। तो मतलब ये जो पीडी रेज है ऑपोजिट डायरेक्शन में आके आपका मतलब एक एज ऑब्स्टैकल यूज़ नहीं करें, बेसिकली वही है। इट मूव्ड अप, इट हैज़ टेकन दैट पर्टिकुलर लो, टेकन दैट इंजीनियर लिक्विडिटी एंड उसके बाद आई वुड हैव नेवर ट्रेड ओवर हियर। मेरे को लगेगा कि ये जाएगा नीचे एंड ये लो को निकाल देगा यहाँ से, बट इसके बाद यहाँ पर प्राइस इज शोइंग कि प्राइस यहाँ पर एक काइंड ऑफ स्पीड मोमेंटम प्राइस को मिल रहा है। इट मूव्ड अप अगेन, वॉल्यूम बैलेंस के पास गया, मूव्ड बैक, मूव्ड अप अगेन यहाँ पे। तो देख रहे हो कितना बैक एंड फोर्थ यहाँ पे प्राइस एक्शन है एंड आपका जो लिक्विडिटीज है बहुत कम यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। दैट इज डेफिनेटली व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट फॉर अ ग्रेट प्राइस मूवमेंट। मेरे को अब इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि टू द टेक यहाँ पर प्राइस ने इसको टैप किया है अराउंड लाइक 2055 टाइम पीरियड को, यहाँ से बैंक, दैट्स अ गुड सिग्नेचर बेसिकली। उसके बाद अगर आप ये 5 मिनट के 15 सेकंड के बेसिकली, सॉरी, अगर आप इसको मार्क करोगे देन यू वुड फाइंड कि प्राइस कैसे इसके मिड क्वाड्रेंट के अंदर, यू नो, लेट मी जस्ट रिमूव दिस बॉर्डर हियर। is a price escape consequent equation को, this looks like that it is overlapping like this particular gradient, consequent equation के ऊपर टैप कर रहा है, इसका यूज कर रहा है टू मूव प्राइस अपवर्ड्स अगेन। अब यहाँ पर ये देखिए कि वी हैव गॉट अ सीवी हियर, प्राइस ने जैसे इसको क्रॉस किया वी गॉट इमीडिएट रिजेक्शन फ्रॉम हियर, दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि प्राइस ने भी क्या किया है कि प्राइस ने भी एक प्रीमियम अरे को क्रॉस कर दिया एंड अवर बायस इज एक्चुअली बुलिश, राइट। सो दैट्स एन इमीडिएट रिएक्शन फ्रॉम दैट। इसके बाद प्राइस जैसे इस पर्टिकुलर एरिया को लीव किया आफ्टर शोइंग रिस्पेक्ट की प्राइस इज एक्चुअली
टेकिंग यूज ऑफ ऑल दीज अपर टाइम फ्रेम क्वाड्रेंट्स। जैसे प्राइस ने इसको रिमूव किया, एग्जिट हुआ यहाँ से, दैट कैन बी अ गुड बाय, stop loss over here, and can just write out this particular thing, stop loss to the break even, and then got all these things, right? So ये था इस छोटे से मूवमेंट के एनालिसिस। आपको बचना कहाँ पर है? आपको बचना यहाँ पर है, इसके अंदर। यहाँ पर आप क्या करोगे? आप अपना लॉस करोगे बेसिकली, राइट? तो बेसिकली मैं होता तो मैं यहाँ पर भी एक ट्रेड ले लेता। इफ आई वुड बी एक्चुअली ट्रू with you all, then I would have taken a trade right over here. But जैसे डाउन जाता, I would have collapsed my position. उसके बाद में as it is going downwards, it is rejecting this CB, I would have taken a sell trade over here. Attack these things, attack these areas. मेरा पहला मेजर जो प्रॉब्लम होता वो होता था कॉन्सिक्वेंट क्रूजमेंट, कैसे यहाँ पर प्राइस एक्चुअली में रिएक्ट कर रहा है। You can see this quote, consequent encroachment of this 5 minutes. It is using, like, it is very important right over here. कितनी बार इसको यूज कर रहा है, consequent encroachment का टाइम क्या, मूव्ड अप, कैसे इसके बॉर्डर्स के पास है, ये बाहर कलर्स कर रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स द थिंग विच यू शुड बी नॉट, मतलब इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं, दैट्स द थिंग विच यू शुड नॉट फील प्रॉब्लम, राइट? सॉरी फॉर माई बैड इंग्लिश। एंड लेकिन ये जो है राइट over here, that's actually showing कि price is not that much bearish because it can easily cross that area, even though I can see that it has just returned, but it is waiting for one thing, which is time, right? Again price has crossed this area and down gear, thus got a big volume imbalance, but ejected from that consequent encroachment of this CB, basically move downwards, upper quadrant के पास गया, up गया, just to fill out this volume imbalances, move downwards, low quadrant, upper गया, यहाँ पर होल्ड कर रहा है प्राइस को, that's a good buy, stop loss here, and then you can just write out the whole trade. तो आपको इससे बचना है, वेट करिए मैक्रो टाइम फ्रेम को आने का। मैक्रो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपके घंटे का मैक्रो। ना इनिशियली आपने क्या बोला था, आईसीटी ने बेसिकली क्या बोला था कि आपका जो भी मूवमेंट होता है, सबसे पहले क्या होता है कि प्राइस एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाता है, एंड उसके बाद प्राइस आपका जो रियल डायरेक्शन जो भी प्राइस को लेना होता है, प्राइस वहाँ पर जाता है। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं जूडस। सो वी कॉल दिस अपोजिट डायरेक्शन एज जूडस, राइट? राइट, तो अब हम क्या करते हैं कि ये प्राइस को देखते हैं। ओके, सो कि आपको आखिरकार में मेरे को आपको एक और चीज़ दिखाना है कि हमारे पास, राइट, बिकॉज ऑल दीज बीसीज एंड ऑल दी सीबीज दे आर योर इंस्ट्रूमेंट। आप उन लोगों का हेल्प ले सकते हो, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स का, टू फील कि आखिरकार में प्राइस कहाँ पर जाने वाला है, राइट? हमारे पास एक सीबी भी यहाँ पर था, राइट? if I just color that to yellow, and if I just move back to the 15-second time frame, you can also see कि क्या perfectly, so perfect to the tick, perfectly price ने CB का यूज़ किया है, moved up, quadrant का यूज़ किया, moved up basically. That's a good area, right? And with very less drawdown, if you're just getting these movements, that's very good. Let me just calculate Ethereum profit calculator. Okay, so I was around at 1627. 1627, and if you be just till here, right, अगर आप बस इतना हो गए, leave all those movements just here, 1633,
right? If the investment would be like $100 basically, all right, and for 200, ये प्रॉफिट्स दिखा कहाँ रहा है? इन्वेस्टमेंट फीस अराउंड लाइक कितना होगा? $1 मान लो, $1। ये हो क्यों नहीं पा रहा है? वेयर इज क्रिएट पोर्टफोलियो? क्या नहीं, इथेरियम एंट्री प्राइस कितना है? 1627। एग्जिट प्राइस कितना है? 1633। आई एम यूजिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। अबे यार ये रुपीज में क्यों दिखा रहा है? वक्त राइट, ये सही लग रहा है मेरे को। 1627 तो नंबर भी याद हो गया मेरे को। 33 था ना, 1633। इन्वेस्टमेंट फीस 1, फीस 1 एंड तो लाइक ये बहुत ही छोटा मूवमेंट था प्राइस के अंदर बेसिकली, एंड यू वुड हैव अर्न लाइक दिस मच अगर आप बेसिकली लेवरेज लेते, बिकॉज दैट्स अ इन्वेस्टमेंट। एंड आप क्या कर रहे हो कि आप लेवरेज भी ले रहे हो विद लाइक 20x or 30x, you would have earned a lot ना, राइट? सो पूरे प्राइस एक्शंस को देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं बेसिकली। रिएक्शन फ्रॉम दिस से भी मूव्ड अप। अब यहाँ पर अब आपको देखना है कि यहाँ पर क्या ऐसा पीरियड है जिसका आप यूज़ कर सकते हो टू गाइड दैट प्राइस एक्शन। 5 मिनट में जाता हूँ। कैन आई गेट समथिंग? अब इसके बाद मैं ये बात नहीं बताने वाला हूँ। इसके बाद में सिंपली अब यू नो आई वुड नॉट लाइक हर बार मैं ये नहीं करूँगा। Initially, it has facing some problem in crossing at consequent encroachment. It moved up. Sorry, low quadrant. It moved up. Consequent encroachment से fell short हुआ. Moved downwards. Use this area. Find support of it. Moved up. That's a good reaction. And this is the area which you should be actually feel कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला आपके पास this particular area. But as it moved up, taking that bang, that's a good punch again. These very, very, very ugly price action right now. Right. So we don't have anything. Let's see this one. Right. And then this one. All right. Let's see the reaction from this area.
That's a very premium run here. Let's see how the price actually uses this upper quadrant area. Definitely it's facing some problem here. Let's see. We have an unmet objective over here, so if I can just get a trade to just hit this, that would be very good. Right now it's in the consequent encroachment. We have volume imbalance here. Thanks. Right, I want speed right now. And where is that high? Now it is using the lower quadrant. I want it to use this lower quadrant as well as this wick, right, to move and cross this high basically. And cross that high, I'll take one partial off. Here we go. And stop loss to the break even. Let's write the trade. A bit. So that's basically a model. Let's see. Settings. Execution mark. If it forms a BC here, I want to see that how the BC reacts in the quadrant area there. Move down to the consequent encroachment of this particular wick. Let's see. It should react immediately if it is actually bullish right now. I don't want the price to actually consolidate here because right now the price is actually the quadrants of this basically BC, I guess, which I have marked at that time. It should cross the consequent encroachment if it's actually bullish. If not, that is definitely not the thing which I would expect to do. It's actually bullish. See, the price is taking time crossing the consequent encroachment. It's having difficulty doing that particular thing. What do you think in this particular situation? How the price reacts from this? Maybe let's see.
Yeah, got stopped out. The partial. Okay. Let's see the price move towards this wick and this CB basically, and let's see if we can get something from the CB. Taking that short term low. Let's see how the price reacts from this consequent encroachment. See कैसे price low current के पास react कर रहा है, and this CB also want the price to move up from here. Using the upper quadrant here, definitely not a good thing. Now I wanted the price to use this area, this BC and this lower quadrant to move up. I don't want the price to consolidate here. There is a volume imbalance. Price can absolutely reverse the position from here, but I don't want that. And let's see. That's a mini macro condition. Saw the reaction from the consequent. कितना मतलब, how much time is it actually taking in the consequent encroachment of this TV? Let's say I want to see like what happens to the price right now. Let's see क्या होता है. I don't know. Actually, I don't have enough battery.
Let's see. It's actually waiting for the macro would start in 20 seconds basically. Macro started. Now that macro. Let's see. I knew that from that particular thing the price is doing. There is something fishy. Now the price is at the lower quadrant. Shouldn't face zero time here. Actually want zero. No problem here crossing this area. It's in the low quadrant of the upper CV. Wanted to cross that. It's actually bullish. Facing time here. That's a good thing. Let's see how does it reach the short-term high. I'll get one off and stop loss to the break even. Did it? Test it. There you go. And stop loss to the break even. Little bit. Yeah. Now let's watch the price action. That is the reaction from this area. That's the upper area of that particular CB basically. Right now I guess some thunderstorm is coming on my home. I guess the clouds are there. Right. Let's see how does it use this upper area of the CB. Like it's looking like the mosquitoes are taking that roots and it's ready to launch that rocket there. It's looking like that. I want to see how it reacts from this volume imbalance there. It's already 34 minutes. Probably some thunderstorms coming.
La la. Lower area of this PC. Probably it will take my stuff then. Go on. I knew that. So what exactly is this? We're trying. Oh my god. I have to leave right now. Some thunderstorms coming. Right. So I'll meet you on the very next day. What I have learned is I will tell you in the next video. Right now the thunderstorm is coming. So guys, meet you soon. Till then, take care and see you.